Hello students, today I will again start a new model test paper related with the class 3rd for the session March 2025 and today's our model test paper is based on the English subject and this paper is recently issued by the HP Board of School Education Dharamshala according to the new pattern, and the main purpose of solving these model test paper is to provide the benefits to each and every students at their homes. So let us continue with our model test paper that is recently issued by the HP Board of School Education Dharamshala according to the new pattern. और इससे पहले जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए हैं क्लास 3rd के मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज के जो पेपर है वो सॉल्व करवा दिए हैं, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कि न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि पेरेंट्स को इजीली पता चल सके कि जो नया पैटर्न है बोर्ड का पेपर के एग्जाम्स का वो किस तरह का रहेगा, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, हर क्वेश्चन के जो होंगे वो मार्किंग जो होगी वो किस तरह की रहेगी, जिससे कि वो इजीली उस हिसाब से पेपर की तैयारी कर सके. तो टाइम अलॉटेड फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 3rd इज ऑफ 3 hours एंड मैक्सिमम मार्क्स इज ऑफ 50 marks. और सबसे पहले जैसे मैं कंटिन्यूटी में बता रही हूँ कि सबसे पहले जो आपको मेंशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास रोल नंबर, subject as well as the date on which the paper is to be held, and time allotted for the paper is of 3 hours. जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या क्या रहेंगी पेपर के लिए. सो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी के सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपल्सरी रहेंगे आपको करने. मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, जो भी मार्क्स होंगे दैट आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. So your first question is read the passage and answer the following questions, and this passage is of 5 marks. आपके पास एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज को आपने केयरफुली रीड करना है, और केयरफुली रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे होंगे आपको उसके आंसर्स देने होंगे. सो लेट अस रीड दिस पैसेज. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल pulled and pulled. Up comes the enormous turnip. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl, and they did. So this is the passage, and now we shift to the questions that are related with this passage. First question is, who tried to pull up the turnip? Who tried to pull up the turnip? So the answer is the old man, the old woman, the boy and the girl. All 4 of them tried to pull up the turnip. Second is, what was the result? The enormous turnip came up. This was the result. The enormous turnip came up. Next question is, fill in the blanks. It was an dash turnip. So it was an enormous turnip. B part is, the turnip belongs to Crucifera family. Next is question number 4. Write the meanings of these words in Hindi. The words are, number 1 is enormous, second one is pulled. Enormous, the meaning of enormous in Hindi is बहुत बड़ा. Second one is pulled, the meaning of pulled is खींचना. Next is question number 5. Give the opposites of. The opposites of old, and the second one is pulled. The opposite of old is new, and the opposite of pulled is pushed. So this question carries 5 marks. Each question carries 1 marks. Hence the total comes out to be 5 marks. तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है पैसेज का वो रहेगा आपका 5 मार्क्स का, और उस पैसेज से रिलेटेड जो है वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. हैज द टोटल कम्स आउट टू बी 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, choose the right answers, and this question is of 10 marks. That means each question carries 1 marks. Hence the total comes out to be 10 marks. 10 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए होंगे, हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 1 मार्क्स रहेगा. इस तरह से टोटल जो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट हु इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. योर ऑप्शंस आर लॉयन, क्रैब और कैमल. सो लॉयन एंड क्रैब, दीज आर नॉट द शिप ऑफ द डेजर्ट, बट camel is the ship of the desert. So this is the right answer, camel. Camel is the ship of the desert. Second question is, name the king of the forest. Who is known as the king of the forest? Options are owl,
lion, or monkey. So out of these options, which is known as the king of the forest? So lion is known as the king of the forest. So here this is the right answer. Question number third, there are no rivers or lakes in. Options are plains, mountains, or plateaus. So out of these, where rivers or lakes are not found. So in the plateaus, no rivers or lakes are found. So the option is plateaus. In this, no river or lakes are found. There are no rivers or lakes in plateaus. How old was the Meena? How old was the Meena? Options are 10, 4 or 12. So Meena was 12 years old. So this is the right answer. Meena was 12 years old. Meena was 12 years old. So this is the right answer. Next is question number 5. What did the tiger cub catch one night? A deer, a frog, a pig. I repeat the question again. What did the tiger cub catch one night? Your options are a deer, a frog, or a pig. So a frog. So this is the right answer. A frog. So the tiger cub catch one night, that was a frog. Next is, how many fish are there in the sea? 100, 1,000 or millions. So there are millions of fishes in the sea. तो कितने fish थे sea में? Options are 100, 1,000 or million. So there are million fish in the sea. So this is the right answer. Next is, who was getting married at Nina's house? Brother, sister or aunt? So who was getting married at Nina's house? Aunt. The answer is aunt. Next is, tree or trees gives us. Trees give us. Options are say shade, fruit, medicine, or all of these. I repeat the question again. Trees give us. Options are shade, fruit, medicines, or all of these. So trees give us shade, fruit, medicines, all of these give us by the trees. So this is the right answer, all of these. The right answer is all of these, because shade, medicines, fruits, all of these give us by the fruits. So this is the right answer. Next is, who brings us letters? Options are postman, driver, milkman. So out of these options, who bring us letters? So postman brings us letters, because always postman brings us letter. The trains runs either on the mountains, either on the plains, either on the rivers, or all of these. So the trains runs on the mountains, on the plains, as well as on the rivers. So all of these are the correct options. So this question is of 10 marks. Next question is question number 3, that is, answer the following questions. Each question carries 1 mark, hence the total comes out to be 5 marks. Hence the total comes out to be 5 marks. Your first question is, what does the camel eat in the desert? So the camel eats thorny bushes in the desert. The camel eats thorny bushes in the desert. So this is the right answer. Who does the postman brings letters for? Your question number 2 is, who does the postman brings letters for? The postman brings letters for the child's parents. I repeat the answer again. The postman brings letters for the child's parents. So this is the right answer. Next is, what is vegetable man selling? What is vegetables man selling? The vegetable man is selling peas, cauliflower, cabbages, potatoes, cucumbers, radishes, and carrots, etc. And carrots. So the vegetable man selling peas, cauliflower, cabbages, potatoes, cucumbers, radishes, as well as carrots. Next question is, why did Sonu chase the butterfly? Sonu chased the butterfly to catch it. So this is the right answer. Sonu chased the butterfly to
catch it, to catch it. That's why Sonu chased the butterfly to catch it. So this is the right answer. Next is question number 5. Why was a little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was so very small. That's why the little fish was unhappy. The little fish was unhappy because he was so very small. That's why she was unhappy. Next question is question number 4, and your question number 4 is related with fill in the blanks, and each fill in the blanks carries 1 mark, hence the total comes out to be 4 marks. That means there are 4 fill in the blanks and each fill up carries 1 marks, so total comes out to be 4 marks. First fill in the blanks is you can cross sea in dash, either bus or ship. So out of these options, which is the correct option? You can cross sea in ship. So this is the right answer. Give me some food or clothes. Give some dash to eat, क्योंकि clothes को हम eat नहीं कर सकते, so give some food to eat. So this is the right answer. The song is in dash, either in the Telugu medium or in the English medium. The song is in which medium? Either that is in the Telugu medium or is in the English medium. So the song is in English medium. Mahesh is dash. Mahesh is dash, either singing or saying. Mahesh is either singing or Mahesh is either saying. So out of these options, Mahesh is singing. So this is the right answer. Next question is question number 5, that is true or false. Each true or false carries 1 mark, hence the total comes out to be 4 marks. So there are total 4 true or false in this question. The child in the poem is sad, either it is false or true statement, because the child in the poem is sad. In this statement, the child in the poem is sad. So either this statement is true or false. This is false statement because the child in the poem is not sad. Next is the acorn becomes an oak tree when it growing. Oh, sorry, not growing, but when it grows. The acorn becomes an oak tree when it grows. Yes, this is true statement because the acorn becomes an oak tree when it grows. So this is the true statement. The trees gives us shade. Yes, this is again true statement because trees gives us medicines, shade as well as fruits. So this statement is true statement. There are a great many million fish in the sea. This is again a true statement because there are millions of fish in the sea. So this is the true statement. Next is question number 6, and the A part is fill in the missing letters and complete the words. Each question carries half marks, hence the total comes out to be 2 marks. Horse. So Horse. So this is horse. Next is ship. मिसिंग वर्ड को मिलाकर क्या बनता है? शिप. नेक्स्ट मिसिंग वर्ड जो आपका टाइगर. नेक्स्ट वन इज माउस. सो दीज आर द मिसिंग वर्ड्स. और इसमें हम क्या करते हैं, इन मिसिंग लेटर्स को फिल कर कर हम कंप्लीट वर्ड बना रहे हैं. तो इन मिसिंग लेटर्स को डालकर जो कंप्लीट वर्ड बन रहे हैं, फर्स्ट का जो बन रहा है दैट इज हॉर्स, सेकेंड वन इज शिप, थर्ड वन इज टाइगर एंड द फोर्थ वन इज माउस. बी पार्ट है चेंज द नंबर. इट इज अगेन ऑफ 4 मार्क्स. ईच जो है वो कैरी करेगा हाफ मार्क्स को. टोटल 4 है तो टोटल कम्स आउट टू बी 4 मार्क्स. सॉरी 1 मार्क्स के रहेंगे तो टोटल जो होगा वो कितना रहेगा 4 मार्क्स का. बॉय, बॉयज, बस, बसेस, फुट, फीट, टूथ, टीथ. So there are 4 change the number. Each number carries 1 marks. Hence the total comes out to be 4 marks. इसका C part जो रहेगा change the gender. It is again of 4 marks. He, she, sir, madam, son, daughter, king, queen. So this is again of 4 marks. 4 आपके gender रहेंगे change करने के लिए. हर एक gender जो होगा वो carry करेगा 1 marks को. तो total जो आएगा वो आएगा 4 marks का. Next is underline the letters which are silent in the following words. First is silent जो रहेंगे WALK, that is walk. L is silent. Straight,
नेक्स्ट इज स्ट्रेट, इट इज ऑफ 2 मार्क्स, ये कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, ईच कैरीज हाफ मार्क्स, टोटल 4 है, तो इस तरह से टोटल जो बनेगा वो 2 मार्क्स का बनेगा। नेक्स्ट इज कॉट, CAUGHT, आपको अंडरलाइन करना है लेटर्स को विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, L, उसके बाद आपका रहेगा G, नेक्स्ट इज कॉट, उसके बाद काम, L. So these are the words or these are the letters जिनको हमने अंडरलाइन किया है, those letters which are underlined, these are silent in the following words. Next is write the 10 lines on any either that is a domestic animal or myself. Out of these you write the 10 lines about the domestic animal, whatever your domestic animal, whatever your pet animal, or the second one is myself. So here the domestic animal is my pet cat. I have a pet animal and my pet animal is a cat. Her name is Kitty. She is black with white and brown in color. It has greenish eyes. It has short and silky hair on its body. She has a long and furry tail. It has sharp claws. It like to chase mouse. It like to chase mouse. It makes mew sound and fish is her favorite food. So these are the 10 lines about the domestic animal or my pet cat. Myself में भी ऐसे लिख सकते हैं आप, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, माई नेम इज वट एवर द नेम, जो भी होगा वो आपको मेंशन करना होगा। आई एम जितने भी साल के होंगे, आई एम 5 years old, आई एम 6 years old, एंड माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर। आपको फादर और मदर का नाम मेंशन कर सकते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर ए वॉक डेली, एंड आई ऑलवेज stands up first in the class, or I always stood up first in the class, and इस तरह से आप माई सेल्फ के बारे में भी जो है वो लाइंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका she can climb the trees, she likes to play in my bed, I like to play with my kitty and I love her very much. Next is write an application to the school headmaster for 1 day sick leave, to the principal, whatever the name of the school that is, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। जिस डेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है उस डेट को आप मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एंड नेक्स्ट इज सर और मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू कम टू द स्कूल सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. आई हैव बीन prescribed by our family doctor to take proper rest for at least 5 days, hence kindly grant me leave from जहां से जहां तक आप चाहते हैं कि मुझे लीव चाहिए वो डेटा मेंशन कर सकते हैं, एंड आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, व्हाटएवर द नेम, आपको नाम मेंशन करना है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो क्लास मेंशन करनी होगी, एंड व्हाटएवर द क्लास रोल नंबर, उस क्लास रोल नंबर को आप वहां मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटे आपका टोटल जो रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के, सो द टोटल number of questions that are allotted in the English subject is questions, 8 questions रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस के कितने कितने मार्क्स रहेंगे वो भी आपको बता दिया गया है। टोटल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जो है वो अटेम्प्ट करने का किस तरह का रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना है अपने पेपर का, और उस हिसाब से आप क्या करें, अपने पेपर की तैयारी करें। तो इस तरह से हमने क्लास 3rd के अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉडल टेस्ट पेपर दैट इज issued by the HP Board of School Education धर्मशाला for the session 2025, उस हिसाब से आपके हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर जो वो सॉल्व करवा दिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एज वेल एज EVS। अब एक पेपर हमारा बचा है 3rd क्लास का, वो है आपका हिंदी का, उसको हम जल्द ही आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग कर सकें और आपके पेरेंट्स भी आपको अच्छी तरह से घर बैठकर तैयारी करवा सकें।